शेनवारा जागतीक नर्स दीस जालो. भलायकी खात्यान राज्य पावंड्यार हो दीस सोमारा मनयलो. ह्या निमतान ज्येष्ठ नर्सीचो भोवमान केलो. ह्या सुवाळ्याक राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा, कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, भलायकी मंत्री आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आर्डेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस आनी विलियम रॉड्रिगीस. If the health is not good, it is not possible us to gain the wealth. I am not talking about the wealth in terms of the money or the assets which we are having, or we are trying to get our health or bank account a very high or huge respects. But I am just trying, if the health is not good, it is not possible us to take the education, to look our children's. But one concern which is raised by Dr. Wilson is that the below poverty people or especially the ladies who are not taking the care of their own health because of the financial burden. We have to always make the awareness among all the people who should take the care of their health first. If the health of the woman or the head of the family is worsened, then the entire health of the family is not keeping well, because she is the only person or woman who has to take care of all the children and their spouse also. I also know the difficulties of the sisters or the nurses who are working in the different health centers, the GMCs and the private sectors, because we have to also face the frustration about the caretaker of the patients. I also know that you have also heard or even abuses in all these organizations, because we are human beings. It is our also duty. We have to always be a social workers. इस दिन को इसलिए मनाते हैं कि हम बार बार बैठे, जब शुरुआत की थी इस कार्यक्रम का कि नर्सिंग का फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, तो शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा परिवार हो जाएगा, इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी और इतने प्रकार के कार्यक्रम इसके साथ जुड़ते जाएंगे. तो ये इसलिए भी है कि हम विशेष करके इस विषय पर ज़्यादा सोचें. विभिन्न लोगों का, आप लोगों ने भी बैठ के विचार किया होगा, नई बातें क्या जोड़ी जाए. आज यहाँ विचार हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ये डे मनाना भी ठीक ही है. विषय तो लिया है द ह्यूमन राइट टू हेल्थ. ये सब जानते हैं कि सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य होता है. एक कहावत भी है इंग्लिश में कि when wealth is gone nothing is gone, when health is gone everything is gone. ये सब हम लोग समझते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान भी नहीं देता. और यदि वह ध्यान देते हुए भी बीमार पड़ता है तो चारों ओर खोजता है कि मुझे दवा मिल जाए, मुझे सेवा मिल जाए, लेकिन सबको नहीं मिलता.